dear students, myself Gangadhar Solanke, and I welcome you all to the MCGM's virtual classroom. My dear students, our today's subject is history, and in history today we'll be learning the topic India before the times of Shivaji Maharaj. In the first chapter of our history textbook, we people learnt about sources of history, and in that we learnt about the concept of the sources of history and then the types of sources of history, in that the physical sources, oral sources, written sources, and the things which are under the heading of that particular sources. For example, in the written sources, we people learnt about the document of proceedings in the courts of kings, then the judicial verdicts or orders, travelogues of foreign travelers, and many more things. In the oral sources, we people learned about folk songs, then gatha, shlokas, abhangas, povada, proverbs, legends, and myths. So all these things were about the medieval Indian history, because in the 7th standard history we people are going to study about the history of medieval India. And now in the second topic we are going to learn about the India before the times of Shivaji Maharaj. शिवाजी महाराज के पहले का भारत. शिवाजी महाराज के पहले कौन कौन से राजाएं थे, कौन कौन से किंगडम्स थे, कौन कौन से किंग थे, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है इन दिस टॉपिक इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज एंड द डिफरेंट किंगडम्स. For example, this one here, Rajput kingdom, then the Chalukya empire, this one is here, then the Kalinga, Orissa, Palas, this one Tibet. So in this topic we are going to learn about the various ruling powers, in India before the times of Shivaji Maharaj. So various ruling powers existed in India during that period, and about one by one now we'll study in detail. So first one is here on the screen. Pal in the 8th century was famous dynasty in Bengal. So started with the Bengal. In Bengal, Pal, very famous dynasty, and here you can see on the map this one, Pal dynasty. In central India, the Gurjar Pratihar power spread up to Andhra, Kalinga, Vidarbha, West Kathiawar, Kannauj, and Gujarat. So about that also now we'll try to understand with the help of map. In central India, the Gurjar Pratihar, this one, Pratihar empire. People just observe these maps carefully so that you can easily understand the concept, और exactly कौन सी जगह है वो भी समझने में आसानी होगी. So in central India, the Gurjar Pratihar power spread up to Andhra, Kaling, Vidarbha, West Kathiawar, Kannauj, and Gujarat. This one, Kannauj. This one you can see Gurjar Pratiharas, and the Pal here, Palas in the 8th century was a famous dynasty in Bengal. Now next one, among the Rajput dynasties in North India, the Gadwal and the Parmar dynasties were the important ones. Now we people talked about the Bengal, then about the central India, and now the region Gadwal and the Parmar dynasties in the North India. Among Rajputs, if we people talk about Rajputs, then the Prithviraj Chavan, you may heard about this. Prithviraj Chavan, very famous king in the medieval Indian history.
Prithviraj Chauhan, belonging to the Chauhan dynasty, was a valiant king, and in the first war at Tarai, Prithviraj Chauhan had defeated Muhammad Ghuri in the first war of तरई. पहला जो तरई का वार हुआ तरई नाम की जगह पे, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को हरा दिया. बट मोहम्मद घुरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वॉर एट तरई. इसका मतलब तरई में दो युद्ध हुए. पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को हरा दिया, बट इन द सेकेंड वन मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया. मोहम्मद घुरी ने कई बार इंडिया पे अटैक किए और कई किंग जो थे यहाँ के, उन्होंने उसे वापस भेज दिया, जहाँ थे वहाँ से हरा के भेज दिया, बट वो धीरे धीरे सक्सेस होता गया और अंदर 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 आने लगा. अबाउट दैट वी आर टॉकिंग हियर. एट द फर्स्ट बैटल ऑफ तरई, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड द मोहम्मद घुरी, बट इन द सेकेंड वन मोहम्मद घुरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान. और सेकेंड थिंग, ये चैप्टर ऐसा ही है, इसमें हमें बस अलग अलग पार्ट्स जो है हमारे कंट्री के, अलग अलग रीजन जो है हमारे कंट्री के, वो देखने हैं, और वहाँ पे कौन से किंग का राज्य था, कौन सा किंगडम था, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी. इट इज़ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव की तरह है कि एक जगह का नाम है, फिर वहाँ पर कौन सा किंग था, कौन सा किंगडम था, कितने सालों तक वो रहा, और उसको किसने हराया, फिर कौन जीता, ये सारी चीज़ें इस लेसन में ज़्यादा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट अगेन एंड अगेन. जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव टाइप लिख के रखोगे. फॉर एग्जाम्पल, इन सेंट्रल इंडिया द गुर्जर एंड द प्रतिहार, देन इन नॉर्थ इंडिया the Rajput dynasties, like that. So Rajaraj first, next one, and Rajendra first, belonging to the Chola dynasty in Tamil Nadu, were eminent rulers. Now we're talking about the Tamil Nadu. There who were there, Rajaraj first and Rajendra first in Tamil Nadu. On the map you can see this one, Chola dynasty here. The Cholas conquered the Maldive Islands and Sri Lanka using their naval strength. Sri Lanka also, मतलब उस टाइम पे उनके पास नेवल सोल्जर्स थे जो पानी में लड़ सकते थे, ऐसी आर्मी चोलाज ने बनाई थी. किंग विष्णुवर्धन, belonging to the Hoysal dynasty in Karnataka, and conquered the whole of Karnataka. So basically the Cholas conquered the Maldive Island and Sri Lanka, not only Maldives but Sri Lanka also, using their naval strength. Then King Vishnuvardhan, belonging to the Hoysal dynasty in Karnataka, had conquered the whole of Karnataka. In the next one you can see this, but here first try to understand this with the map. Chola influence from these to these to these, this area. Next one, King Vishnuvardhan, belonging to the Hoysal dynasty in Karnataka, conquered the whole Karnataka. पूरी तरह से यहाँ पे हमें मैप में दिख रहा है. तो बस एक राजा का नाम याद रखना है, वो कौन से घराने से था. जैसे चोला डायनेस्टी है, पाल डायनेस्टी है, जैसे चौहान डायनेस्टीज है, और उनका किस रीजन में, किस एरिया में उनका राज्य था. यही हम इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज. नेक्स्ट थिंग, ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोविंद थर्ड of the Rashtrakuta dynasty. Now we are talking about Rashtrakutas in Maharashtra, especially about Maharashtra. During the reign of Govind III of the Rashtrakuta dynasty, the Rashtrakuta power spread from Kanauj up to Rameshwar. Here in this map you can easily understand, and here also, from Kanauj to Rameshwar, especially in Maharashtra, Rashtrakuta empire. So with the help of map it is very easy to understand. Later Krishna III conquered the region up to Allahabad. तो गोविंद थर्ड के बाद राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में कृष्णा थर्ड ने भी बहुत दूर दूर तक जो रीजन है अपने किंगडम में लाया, अप टू अलाहाबाद. सो इट इज़ अगेन एंड अगेन
I'm repeating that the thing which is very important to understand such topics in history, that you have to concentrate on the maps. जितने ज़्यादा मैप्स हम देखेंगे और एरियाज और रीजन मैप में देखेंगे तो समझने में ईजी होता है. Now next one, 3 dynasties of the Shilahars emerged in western Maharashtra. One dynasty ruled over Thane and Raigad in North Konkan, the second in South Konkan, while the third dynasty ruled over some parts of the present day Kolhapur, Satara, Sangli and Belgaum districts. So when we talk about medieval Maharashtra के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 3 dynasties of the Shilahars emerged. तीनों एक ही डायनेस्टी से थे, सीलाहार्स, और अलग अलग जगहों पे उनका राज्य था. फॉर एग्जांपल इन ठाणे एंड रायगढ़ एक पार्ट हो गया, देन इन साउथ कोकण एंड देन इन द एरियाज ऑफ कोल्हापुर, सातारा, सांगली एंड बेलगांव डिस्ट्रिक्ट्स. द लास्ट prosperous power before the period of Shivaji Maharaj was of the Yadavas, very famous in the medieval period of the history, and especially when we talk about the Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. महाराष्ट्र में जो लास्ट प्रॉस्परस पावर थी शिवाजी महाराज के पहले वो थी यादवास की. द कैपिटल ऑफ बिल्लम फिफ्थ ऑफ द यादवा dynasty was at Devgiri Fort, which is near Aurangabad, and he extended his rule beyond the river Krishna. Here you can see Yadavas. This was a well-known dynasty of Maharashtra. In the beginning, Chandwad in Nasik district was the principal seat of the Yadavas. The Yadava king then shifted their capital to Sinnar. In the 12th century, Bhillam V took the capital to Devgiri near Aurangabad. Now also you can visit this place, which is historically very important. Yadava kings जो थे उनका capital उनके kingdom की हुआ करती थी. He had himself crowned there. Then Singham II of the Yadav dynasty was the most capable of Yadava rulers, and he established his rule over Malwa, Karnataka and almost whole of Maharashtra. In the 13th century AD, Ramchandra Dev was the ruler of Devgiri when Alauddin Khilji invaded it. Alauddin defeated him. The Yadav power began to decline and soon came to an end. So this was all about the Yadava kings. They also worked in the field of literature. The Yadava period is considered to be the golden period of Marathi language and literature. Here you can see the images of the Devgiri Fort, which was the capital of Yadava kings or of Yadava kingdoms. Golden period of Marathi language and literature, because Yadava kings motivated the people to write and speak in the Marathi language and to create new things in the literature. So it was in this period that the Mahanubhav Panth and the Warkari movement emerged. About that we'll talk in the next lesson, how the Warkari movement helped Shivaji Maharaj in establishing the Swaraj, or how it created awareness among the people socially and also religiously. So in this way, the kingdom of the Yadavas was very important. Next now, invasions from the northwest. Local dynasties like the Yadava and Rashtrakuta ruled in Maharashtra. ये महाराष्ट्र के ही थे, that is why it is given here the word local. Local dynasties like the Yadava and Rashtrakuta ruled in Maharashtra. But
invaders from the northwest conquered the local dynasties there and established their own rule. So here one thing which is very important to understand, ऐसा नहीं था कि कोई एक किंगडम है या कोई एक राजा है जो पूरे भारत पे राज्य कर रहा था. हर जगह पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीजन पे अलग अलग राजाओं का राज्य हुआ करता था और उनमें भी आपस में लड़ाइयाँ होती थी, उनमें भी आपस में युद्ध होता था. तो जब बाहर से कोई आता था तो वो क्या करता था कि इनमें पार्टीशन करके किसी एक को अपनी तरफ खींच लेता था और ऐसे में फिर आपस में लड़ाइयों के कारण बाहर से जो आने वाला है उसका फ़ायदा होता था. हियर ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड. इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट conquered the local dynasties there and established their own rule. In the meanwhile, the Arab power had emerged in the Middle East. Arab rulers turned towards India to expand their empire. And now here, what was the condition? ये जो सब यहाँ के किंग थे वो आपस में ही लड़ाई करने में बिजी थे. इस सिचुएशन को देखते हुए अरब पावर ने देखा कि अभी हमें क्या करना है, हमारा एम्पायर बढ़ाने के लिए इंडिया की तरफ जाना चाहिए. एंड इन दैट द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम attacked the Sindh province in the 8th century. Notwithstanding the resistance of King Dahir, he conquered the province of Sindh. तो उनकी एंट्री हो गई. वहाँ का जो किंग था दाहिर, उसने कुछ अच्छी तरह से लड़ाई नहीं लड़ी या फिर उतना अपोज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था. उसकी वजह से सिंध प्रोविंस जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लग गया. ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब्स केम इनटू पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार अरब जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स के कांटेक्ट में आ गए, मतलब अभी वो धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गए. इन द पीरियड दैट फॉलोड देन तुर्क अफगान्स एंड मुगल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड देयर पावर हियर. तो पहले अरब आए, फिर उनके पीछे पीछे तुर्क आए, फिर अफगान आए, फिर मुगल आए और हर एक ने वहाँ के लोकल जो किंगडम थे छोटे छोटे, उनको हाथ में पकड़ के उनसे लड़ाई लड़के या फिर उनसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ पे अपने छोटे छोटे राज्य क्या किए, बना लिए. दैट इज़ वॉट हियर इज़ गिवन. इन द पीरियड दैट फॉलोड तुर्क अफगान्स एंड मुगल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया came to India and established their power here. Now you can see Iraq, Persia, Indus River and Sindh province. तो ये मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने सिंध प्रोविंस जीत लिया. Invasions from the northwest and in that now in the 11th century CE the Turks began to invade India. उन्होंने फिर स्टार्ट किया. Expanding their territories they reached northwestern frontier of India. आगे चल चल के लड़ाई लड़ के जीत के वो कहाँ तक आए गए, to the western frontier of India. Then Sultan Muhammad Ghazni invaded India many times. बहुत बार आया और इंडिया में जो कुछ आजू बाजू में राज्य थे, छोटे छोटे किंगडम थे, उनको लूट के वापस चला गया. सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी invaded India many times. What he did? He plundered the rich temples at Mathura. जितनी बार आया उसे पता था कि पैसा कहाँ है या फिर उस वक्त की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसे माना जाता है खजाने, वो कहाँ है. एंड दैट्स वाई ही plundered the rich temples at Mathura, Vrindavan, Kannauj and Somnath and carried away enormous wealth with him. हर बार वो आया और हर बार बहुत सी वेल्थ यहाँ से लेकर चला गया. उसे अपोज करने के लिए कोई पावरफुल किंग नहीं था क्योंकि हर कोई अलग अलग तरह से अपने अपने किंगडम को बचाने की कोशिश कर रहा था. ऑन द स्क्रीन यू कैन सी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, एम्पायर ऑफ मोहम्मद गजनी and then how he came or invaded India and then there he plundered the rich temples at Mathura, Vrindavan, Kannauj, Somnath and carried away
enormous wealth with him. Next point now, Sultanate in the north. In 1175 CE and 1178 CE, सुल्तान मोहम्मद घुरी of घूर, कहाँ से था ये? घूर से. सुल्तान मोहम्मद घुरी of घूर from अफगानिस्तान invaded India. पहले सुल्तान महमूद गजनी, then Sultan Muhammad Ghuri also invaded India, and he appointed Qutbuddin Aibak to look after the governance of the conquered territories in India. Now this is also the thing which is very important to understand. ऐसा नहीं होता था कि हर बार कोई किंग आता था, उस पर्टिकुलर एरिया को जीतता था और वहीं रहता था. वो और आगे जीतने के लिए चला जाता था, या फिर वापस जहाँ से आया है वहाँ चला जाता था, या फिर किसी और लड़ाई पे जाता था. तो अपने कुछ खास सरदार जो है, अपने कुछ खास लोग जो है, उनको वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, गवर्नेंस चलाने के लिए अपॉइंट करके चला जाता था. एंड द सेम थिंग हियर, मोहम्मद घुरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक to look after the governance of the conquered territories in India. But what happened next? After the death of Muhammad Ghuri in 1206 CE, Aibak, Qutbuddin Aibak, began to rule the Indian territories under his rule independently. After the death of Muhammad Ghuri, Qutbuddin Aibak अपना खुद का राज्य खुद के नाम से वहाँ चलाने लगा. Then Aibak, who was initially a slave, became the ruler. जो एक गुलाम था पहले, या फिर सुल्तान मोहम्मद घुरी के पास काम करता था, उसकी डेथ के बाद वो खुद क्या बन गया? रूलर बन गया. Aibak, who was initially a slave, became the ruler of Delhi, and he died in 1210 CE. Now after Qutbuddin Aibak, Iltutmish, then Rajia, Balban, Alauddin Khalji, Muhammad bin Tughlaq, Firuz Tughlaq, Ibrahim Lodi and other sultans ruled over India. इतने सारे हैं जिनके नाम अपने बुक में हैं. Ibrahim Lodi was the last sultan इनमें से. After Qutbuddin Aibak, Iltutmish Raj, then Rajia Sultan, then Balban, Alauddin Khalji, Muhammad bin Tughlaq, Firuz Tughlaq, Ibrahim Lodi and other sultans ruled over India. But in that, Ibrahim Lodi was the last sultan. He made many enemies because of his peculiar temperament. It is also depend on the nature of the king, how to react or treat with the people. So because of the temperament of the Ibrahim Lodi, he made many enemies. Daulat Khan Lodi, governor of Punjab, invited Babur, the ruler of Kabul, to fight against Ibrahim Lodi. अब इनमें ही झगड़े लग गए. जैसे after Muhammad Ghuri, Qutbuddin Aibak became the ruler. Now here Daulat Khan Lodi, governor of Punjab, invited Babur, the ruler of Kabul, जो काबुल का ruler था. For what he invited? To fight against Ibrahim Lodi. Then Babur defeated Ibrahim Lodi, and thus the Sultanate came to an end. बाबर ने उसे हराया और वो जो दिल्ली की सल्तनत थी वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई, वहाँ पर समाप्त हो गई. Then the next thing, the kingdom of Vijayanagar. During the reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq of Delhi, there were many revolts in the south against the central power of Delhi, and from these revolts arose the formidable विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स. एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें बस ये समझना है कि इनके आपस में झगड़ों में कभी कोई हारता था, कभी कोई जीतता था, या फिर कभी एक किंगडम के 2-3 टुकड़े होते थे. द सेम थिंग हैपेंड हियर ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली. देयर वर मेनी रिवॉल्ट्स इन द साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली. जो अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे काम करते थे, दे रिबेल्ड, एंड दैट्स वाई, और from these revolts arose the formidable Vijayanagar and Bahamani kingdoms. Here you can see Vijayanagar empire and here Bahamani kingdom.
The brothers Harihar and Bukka from South India were Sardars in the service of the Delhi Sultanate. Harihar and Bukka from South India were Sardars to look after the governance or to look after the administration of the Sultan of Delhi, taking advantage of the instability in the south during the reign of Muhammad bin Tughlaq. They founded the kingdom of Vijayanagar in the south in 1336 CE. By taking advantage of situation, we can say Harihar and Bukka became the ruler. They started their own dynasty there, or they started their own kingdom there. Hampi in today's Karnataka was the capital of this kingdom, and Harihar was the first king of Vijayanagar among Harihar and Bukka. दोनों भाई थे और उनमें से हरिहर जो है वो पहला किंग बना विजयनगर किंगडम का. Harihar was succeeded by his brother Bukka. Bukka brought the region up to Rameshwar under his control. Now the next one, Krishna Dev Rai. Krishna Dev Rai ascended the throne of Vijayanagar in 1509 CE. He conquered Vijayawada and Rajmahendri and annexed the regions to his kingdom. He defeated the combined forces. Of the armies of the sultans who had united under the leadership of the Bahmani Sultan Muhammad Shah. Try to understand here, very powerful king Krishna Dev Rai, because he defeated the combined forces जो इकट्ठा हो गई थी अलग अलग फोर्सेस हराने के लिए उसे, अंडर द लीडरशिप ऑफ द बहामनी सुल्तान महमूद शाह. ड्यूरिंग कृष्ण देव राय's reign, the kingdom of Vijayanagar extended from Cuttack in the east up to Goa. From Cuttack in the east up to Goa in the west, and from the Raichur Doab in the north up to the Indian Ocean in the south. By this sentence, or by the places which are mentioned in the sentence, you can understand the level or the capacity of the Krishna Dev Rai or his skills on the battlefield. He died in 1530 CE. Krishna Dev Rai was a scholar, which means that he was not only brave in the field or in the battlefield, but he was a scholar also, and he wrote Amukta Malayada, a Telugu compendium on polity. The Hazar Ram temple and Vitthal temple were built in Vijayanagar during his reign. So, during his period, many good things happened in the field of literature, we can say, या फिर अलग अलग जगह बनाने के लिए. The decline of the Vijayanagar kingdom began with the death of Krishna Dev Rai. Again, the same thing I am repeating here, which is very important to understand. किसी भी एक किंगडम का डिक्लाइन तब होता था जब कोई एक पावरफुल किंग की डेथ हो जाती थी और उसके बाद कोई उसे उतना ब्रेव किंग नहीं मिलता था उस किंगडम को, तो आजू बाजू के कई जो किंगडम थे उसके साथ लड़ाइयाँ होने के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता था. सेम थिंग हैपेंड हियर विद द विजयनगर किंगडम. आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्ण देव राय, द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगेन in 1565 CE at Talikot in the present state of Karnataka. There was a battle between Adil Shahi, Nizam Shahi, Qutub Shahi, Barit Shahi on one side and Vijayanagar on the other side. The first thing which we learnt, that Krishna Dev Rai once defeated all these people which were under the leadership of the महमूद शाह, द सुल्तान ऑफ बहामनी. जो सारे इकट्ठा हुए थे उनको कृष्ण देव राय ने हराया. बट उसके बाद जो तालीकोट में एक लड़ाई हुई जिसमें आदिल शाह, निज़ाम शाह, कुतुब शाह, बरीद शाह, ये सारे एक साइड में थे, एंड विजयनगर was on another side. Vijayanagar was defeated, and thereafter the dominance of Vijayanagar came to an end. Here you can see
Day in history, 26 January 1565. Battle fought between the Vijayanagar Empire and the Islamic Sultanates or the Sultans of the Deccan leads. Next thing about the Bahmani kingdom. While Muhammad bin Tughlaq was still reigning, some of his Sardars in the Deccan rose in rebellion against him. So all the things were about the rebels and about the rebellious people. Same thing happened with the Muhammad bin Tughlaq also. He was still ruling, but some of his Sardars in the Deccan rose in rebellion against him. In that, the leader of the Sardars, Hasan Gangu, defeated the army of Sultan of Delhi. A new kingdom known as the Bahmani kingdom came into existence in 1347 CE. Hasan Gangu became the first Sultan of Bahmani kingdom. मोहम्मद बिन तुगलक के पास वो काम करने के लिए था, उसने और कुछ सरदार को इकट्ठा किया, उसने मोहम्मद बिन तुगलक को ही हरा दिया और फिर वो क्या बना, राजा बना, उसने बहामनी किंगडम बना दिया वहां पर. He made the city of Gulbarga in Karnataka his capital. So here you can see Bahmani kingdom, this one, Bidar, Gulbarga, the capital of his kingdom, then the Bijapur, Hampi, and here you can see the Vijayanagar kingdom. And now the next one, Mahmud Gawan. Mahmud Gawan was the chief wazir of Bahmani kingdom. He was a good administrator. He strengthened the Bahmani kingdom with his good administrative skills. He started paying the soldiers their salaries in cash instead of through land grants. If we people study the medieval Indian history, then one thing which is very important again to understand is that during that period, for soldiers, many kings or the sardars gave land grants. Land grants देते थे जीतने के बाद, but here Mahmud Gawan started paying salaries in cash. He brought discipline in the army. He introduced many reforms in the land revenue system. He opened a madrasa at Bidar for Arabic and Persian studies. So basically, he worked for the good. He worked for the betterment of the people and he worked in the different fields, जिसकी वजह से हिस्ट्री में उसका नाम लिया जाता है महमूद गवान का. But after the death of Mahmud Gawan, factionism increased among the Bahmani Sardars. The conflict with the Vijayanagar kingdom had an adverse effect on the Bahmani kingdom. Again, Vijayanagar started showing their power. So the provincial governors began to act more independently. जिनको चलाने के लिए दिया होता था वही लोग फिर आगे जाके ताकतवर बनते थे और वो भी सोचते थे कि अगर हम थोड़ा रिबेल करेंगे, कुछ लोगों को अपने साथ ले लेंगे तो हम अपना खुद का एक किंगडम बना सकते हैं. So the provincial governors began to act more independently. This led to the disintegration of the Bahmani kingdom into 5 small powers. इसकी वजह से क्या हुआ, एक बड़ा राज्य जो था वो फिर 5 राज्यों में बढ़ गया. फ्रैगमेंट्स ऑफ द Bahmani kingdoms you can see. Imad Shahi of Warad, Barid Shahi of Bidar, Adil Shahi of Bijapur, Nizam Shahi of Ahmednagar and Qutub Shahi of Golconda. In this way, this kingdom resulted into the 5 small powers. Now in the next topic, we'll talk about the Mughal power. In today's topic, we people learnt about the
different kings and their kingdoms in the different parts of India or in different regions of our country. In the next one, we'll talk about Mughal power. Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications. So my dear students, this is all for today. Thank you very much. Stay home, stay safe, take care.